Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Today's our topic is valence bond theory in coordination compounds. Now let's start the session. Bonding in coordination compounds. In order to explain the nature of bonding and structure of coordination compounds, the valence bond theory was developed by scientist Linus Pauling in 1931. This theory accounts for the coordination bond formed between the overlaps of vacant hybrid orbitals of central metal ions to the filled orbitals of ligands and to form a coordinate bonds. It assumes that the bond formed between the central metal ion and ligands are purely covalent bondings. तो ये bondings कैसे formation होती है? According to valence bond theory, it contain some postulates of this theory. The first postulate is that the central metal ion present in a complex provide a definite number of vacant orbitals. That is central metals जो भी होगा वो क्या provides करेगा? Empty orbitals provide करेगा for the coordinate bond formation of suitable ligands. Suppose it contains 4 coordination number, then central atom provides 4 empty orbitals. Suppose coordination number is a 6, then central metal atoms provide 6 empty orbitals for the ligands to form coordinate bond. Second postulate is that atomic orbitals of metal hybridize to give a set of equivalent orbitals and to form a definite geometry. When these metal orbitals is overlap with the ligand orbitals to hybridization and produce a set of equivalent orbitals and it produce a definite geometry. Suppose it contain 4 coordination number, then the hybridization is sp3 hybridization or dsp2 hybridization depending upon the ligands. It contain 6 coordination number, then hybridization is sp3d2 or d2sp3 hybridization. It also depend on the nature of ligand. 4 coordination number sp3 tetrahedral or square planar geometry and 6 coordination number octahedral geometry. Now this is the most important point of valence bond theory. It contains 2 types of ligands, strong field ligands and weak field ligand. NH3 cyanide and carbon monoxide CO is the strong field ligand, and these strong field ligands can form a spin pairing and form inner complex, and these complex are called as a low spin complex. Strong field ligands contain spin pairing, it form inner complex and low spin to form low spin complex. Weak field ligands H2O, fluorine, chlorine, bromine and iodine, these are the weak field ligand, and weak field ligands can make outer complex, and these outer complex are called as a high spin complex. In strong field ligand, the d orbitals is n-1 d orbitals are take part in bondings, and in weak field ligands nd orbitals are take part in bondings. n-1 d orbitals and nd orbitals, ये orbitals कौन सी होती है और bonding में कैसे टेक पार्ट करती है, हम ये एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे विथ सुपर टिप्स एंड ट्रिक्स. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा निकेल CN4 2-. तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे. तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए निकेल X प्लस 4 into oxidation state of cyanide is -1 is equal to charge -2, x minus 4 is equal to -2, therefore x is equal to क्या आ जाएगा +2. तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2. तो हम क्या लिखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल, निकेल हैविंग एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका अर्गॉन 3d8 4s2. तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में निकेल के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन राइट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. 5, 6, 7 and then 8 electrons. S orbitals में 2 electrons, that is this is a 3d orbital,
4s ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल्स। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, निकेल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे हम, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे एंड बाकी इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज लिखेंगे, these 8 electrons as it is, and 4s contain 0 electrons, 4p also contain 0 electrons. Complex 4 ligands is present. तो हमें कितनी ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। बट हमने अभी यहाँ पे लिखा कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कैन फॉर्म अ स्पिन पेयरिंग। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या करेगा, पेयर्ड करेगा, दैट इज these electrons can be paired, ये 3d 4s and 4p। now complex NiCN4 2-, तो ये रिमेनिंग जो 4 ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4, these 4 ऑर्बिटल्स आर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाएंगी एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हम एरो से भी इंडिकेट्स कर सकते हैं और ये क्रॉस साइन से भी इंडिकेट्स कर सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cn-, ये इलेक्ट्रॉन्स अगेन Cn- के होंगे बिकॉज साइनाइड कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड इट फॉर्म अ स्पिन पेयरिंग। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 hybridization, 1d 1s and 2p orbitals are take part in bonding, therefore hybridization is dsp2 hybridization, it can form dsp2 hybridization। and in dsp2 and geometry in dsp2 hybridization is square planar geometry, it consists of square planar geometry। now magnetic nature, all electrons are paired, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे paired है, hence it is a diamagnetic in nature, it is diamagnetic in nature and in diamagnetic in nature their magnetic moment is directly 0, that is m is equal to 0। in this complex these n-1d orbitals, that is n क्या है यहाँ पे 4 4 - 1 3, these nd orbitals are take part in bonding, hence this complex is the inner complex, it can form inner complex and inner complex are called as a low spin complex, it is inner complex and low spin complex। now next question लेते हैं, next question है निकेल Cl4 2-, निकेल Cl4 में निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 4 - 2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकेल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, निकेल हैविंग एटॉमिक नंबर 28 3d 8 4s2, इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। अर्गॉन लिखेंगे, अर्गॉन 3d 8 4s2। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट 5 अपवर्ड लिखो या फिर हमने अभी यहाँ पे लिखा 3 paired and 2 is the unpaired electrons। 4s orbitals again contain 2 electrons, 3d 4s and 4p orbitals। nickel in +2 oxidation state, these 2 electrons can be removed in +2 oxidation state and all electrons are as it is लिखेंगे, these electrons as it is, 3d 4s and 4p ऑर्बिटल। मैंने अभी यहाँ पे एक ट्रिक्स बताई कि इन वीक फील्ड लिगैंड H2O एंड फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म द स्पिन पेयरिंग, इट कैन फॉर्म आउटर कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये स्पिन पेयरिंग फॉर्म नहीं करेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था these electrons can be shipped because यहाँ पे Cn is the strong field ligand, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करना है because Cl is the weak field ligand and it cannot be form the spin pairing, तो ये इलेक्ट्रॉन्स as it is रहेंगे। These electrons are as it is in 3d orbitals 4s and 4p। यहाँ पे ligands कितने 4 ligands है, तो 4 ligands के हम ये 4 तो हम क्या करेंगे 4 ligands के 8 electrons fill up करेंगे, that is these electrons is chlorine, Cl- के ये electrons होंगे। hybridization is sp3 hybridization,
1s and 3p orbitals are take part, hence hybridization is sp3 hybridization. ये sp3 hybridization आ गया. In sp3 hybridization the geometry is tetrahedral geometry. The geometry of this compound is tetrahedral geometry. It contain 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons है तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ 2 unpaired electrons. Now next question लेते with 6 coordination number. 6 coordination number का क्वेश्चन है. FeCN6 3-. उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. Fe हैविंग एटॉमिक नंबर 26. 26 एटॉमिक नंबर 3d6 4s2. अर्गॉन 3d6 4s2 लिखेंगे. नाउ Fe 6 electrons. First electrons right in upward direction and remaining in downward direction. In s orbitals it contain 2 electrons 3d 4s and this 4p orbitals. Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे? 6 - 3 3. दैट इज Fe in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे हम? दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इट कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? FeCN6 3- में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है. दिस इज अ 3d ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल्स. साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. इट कैन फॉर्म अ स्पिन पेयरिंग. तो स्पिन पेयरिंग कैसे करेगा? देखो, दिस 1 इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट टू द फर्स्ट ऑर्बिटल. दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द सेकेंड ऑर्बिटल. तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पेड. these electrons यहाँ पे पेड and these 1 unpaired electrons as it is रहेंगे. अब यहाँ पे लिगैंड्स कितने? 6 लिगैंड्स है. तो टोटल हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए. दैट इज 1 2 3 4 5 6. these 6 vacant orbitals are take part in hybridization and these electrons can be filled by 6 cyanide ligands. this total ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? 6 Cn- के इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट इज 3d 4s एंड 4p. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? यहाँ पे 2d ऑर्बिटल्स टेक पार्ट हो रहे. दैट इज d2 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट है. देन हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3 hybridization. In this complex n-1d orbitals are take part in bonding. Hence this complex is the inner complex and this complex are called as a low spin complex. The geometry of this compound is octahedral geometry. In d2sp3 hybridization the geometry is octahedral. नाउ नेक्स्ट लेते हैं मैग्नेटिक नेचर. इट कंटेन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. देन इट्स नेचर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है देन पैरामैग्नेटिक इन नेचर. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ इनर कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FeH2O6 3+. Fe एटॉमिक नंबर 26 3d6 4s2. ग्राउंड स्टेट में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. s में 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स. फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3. फेरस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव. दैट इज फेरस कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3d 4s and 4p orbitals. Now H2O is the weak filled ligand. It cannot form the spin pairing. जैसे हमने साइनाइड के लिए किया था 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू फर्स्ट ऑर्बिटल. दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू सेकेंड ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे स्पिन पेयरिंग फॉर्मेशन नहीं होगी बिकॉज H2O is the weak filled ligands. That is these electrons as it is रहेंगे in the 3d orbitals 3d 4s 4p and next d orbitals can be एंटर. दैट इज 4d ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे लिगैंड्स कितने? 6 लिगैंड्स है. तो हमें 6 वैकेंट्स ऑर्बिटल चाहिए. 1 2 3 4 5 6. These 6 vacant orbitals are take part in the hybridization. That is hybridization क्या आ जाएगा यहाँ पे? S 1 ऑर्बिटल, P के
तीन ऑर्बिटल्स एंड डी के 2, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए? दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 6H2O के लिगैंड्स होंगे, चार्ज नहीं आएगा बिकॉज H2O इज द न्यूट्रल फील्ड लिगैंड्स। तो 6H2O के ये इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन दिस ऑर्बिटल्स विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 hybridization. Geometry in sp2d2 hybridization is octahedral geometry. Magnetic nature, it contain all electrons are unpaired, hence its magnetic nature is paramagnetic in nature. These nd orbitals, 4d orbitals, that is nd orbitals are take part in bondings. यहाँ पे nd orbitals bonding में take part हो रही है, hence this complex is called as a outer complex, and outer complex is called as a high spin complex. It is a high spin complex. In this way we can solve these questions on the basis of this postulates. This is the most important postulates for ligands, strong field ligands. These are the 3 strong field ligands. ये हमें याद रखना है। और strong field ligands में क्या करना है? हमें spin pairing formation करनी है and form करनी है। and spin pairing में जो complex formation होंगे, these complex are called as the inner complex और low spin complex, and weak field ligand में spin pairing form नहीं करनी है, वो outer complex, and these complex are called as a high spin complex. I hope you like this video, you like this super tips and tricks of valence bond theory. Then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.